So allowances is generally defined as a fixed quantity of money which is given regularly in addition to salary for the purpose of meeting particular expenses. So there are particular things for which, in order to compensate against those things, your employer generally provides a fixed quantity of money to the employee. That things, that expenses, whether it could be for personal purposes or for official purposes, okay, it is irrespective. There are various expenses. In order to compensate for those, your employer generally provides allowances, okay, and these allowances are generally taxable in the hands of the employee and are to be included in the gross salary of the employee unless a specific exemption has been provided in respect of any such allowance. So अगर किसी भी allowance में अगर IT Act के through अगर कोई भी exemption नहीं provided, it means we have to fully taxable. Okay, this is the general rule that all allowances are to be fully taxable until unless there is any exemption which is allowed by the IT Act. And there are various categories of allowances that we will discuss later today. But in short, whenever the allowances word comes up, you should always make a note कि fully taxable करना है जब तक ये ना पता हो कि वो exempt होगा. तो अगर बिना किसी नाम के खाली allowance आ रहा है तो that has to be fully taxable. So this is the list of the allowances which are fully taxable. Okay, इसमें कोई भी exemption नहीं मिलती है. Whatever amount the employee is getting, these are entirely taxable. जैसे आपका dearness allowance, ठीक है, जब इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर डीए देता है अपने एम्प्लॉयज को, और दिस इज द मोस्ट पॉपुलर अलाउंस व्हिच इज गिवन टू मेनी एम्प्लॉयज. हर जगह ये बहुत प्रिविलेंट है, डीए बहुत जगह मिलता है. तो ये बेसिकली इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है. इट इज ऑफर्ड to the employees for meeting the highly inflated cost in the larger metro cities. So जो अर्बन एरियाज में, मेट्रो सिटीज में रहते हैं जहाँ पे ज्यादा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है एज कम्पेयर टू द नॉन मेट्रो सिटीज, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस भी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को. तो दैट इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हम कर चुके हैं अंडर द डिडक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. बट ये जो डिडक्शन थी दैट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. For non-government employees, the entire amount is taxable. So entertainment allowances basically वो सारे expenses को bear करने के लिए होता है जो कंपनी के clients और उनके customers पे खर्च करता है employee. So जो भी उसके expenses को compensate करते हैं, जो clients और customers के होते हैं, उनको entertainment allowance कहते हैं. Then medical allowance. So कोई भी अगर मेडिकल अलाउंस दे रहा है एम्प्लॉयर, तो इट मींस इट इज फुल्ली टैक्सेबल irrespective of the fact whether any amount has been spent on medical treatment or not. तो चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट पे एम्प्लॉय स्पेंड कर रहा हो, ना कर रहा हो, उसे जरूरत हो ना जरूरत हो, एम्प्लॉयर अगर मेडिकल अलाउंस दे रहा है तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. Then overtime allowance. Okay, so in case employee is working for more than the regular working hours, then the entire amount which he is getting as overtime will be fully taxable. Okay, कोई exemption नहीं है, सारे आपके fully taxable है. Lunch tiffin allowance, this is given in order to meet the food expenses. Cash allowance होता है, तो any allowance in the form of cash, it becomes taxable whether it is marriage allowance, holiday allowance or anything. ठीक है, तो अगर कोई भी cash allowance मिल रहा है तो that is also fully taxable. जैसे काफी बार होता है ना, किसी एम्प्लॉय की शादी होती है तो एम्प्लॉयर का रूल होता है कि वो अपनी तरफ से 15,000 का कैश देगा. तो अगर कुछ भी कैश आ रहा है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल. Then project allowances. Allowances provided to bear the expenses related to the project. So in case any employee is working on a project of the company और उसके जो भी expenses हो रहे हैं तो company उसको एक fixed allowance दे रही है by its name, that is project allowance. तो जो भी खर्चा हो रहा है that is fully taxable. Then servant and helper allowance. तो अगर कोई भी सर्वेंट या हेल्पर दिया हुआ है, उसने हायर किया हुआ है एम्प्लॉय ने, और उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी अलाउंस दे रहा है एम्प्लॉयर, तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एन
employee. Then next one is warden allowance. Warden allowance क्या होता है कि in case कोई employee जो इंस्टीट्यूट है या फिर कोई जो कंपनी है उसका सेफ कीपर भी है, इन द सेंस वो किसी चीज की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि ही हैज टू सेफ कीप दैट अमाउंट, कोई लॉकर है या कोई मशीनरी है या इट कुड बी एनीथिंग, तो अगर कोई कीपर है अगर किसी भी कंपनी का, तो उसको अगर एक स्पेशल काइंड ऑफ अलाउंस दिया जाता है, दैट इज वार्डन अलाउंस, तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल. देन नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, so this is in mostly in case of your physicians कि अगर वो कोई भी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस अगर उन्हें मिल रहा है फ्रॉम देयर क्लिनिकल सेंटर्स और फ्रॉम देयर लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट, सो वट एवर अमाउंट दे गेट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. देन द नेक्स्ट वन इज इंटेरिम अलाउंस. सो अगर कोई भी इंटेरिम मतलब कोई भी फाइनल अलाउंस देने के बजाय कोई बीच में कोई इंटेरिम अलाउंस दे रहे हैं कि जब तक फाइनल नहीं होगा जब तक तुम इतना अलाउंस ले लो, so whatever interim that is between the period the allowance the employee getting, it is fully taxable. ठीक है, so this is the list of your allowances which are fully taxable. जितनी बड़ी लिस्ट हो सकती थी मैंने उतनी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिया. अगर कोई और एक्स्ट्रा आता है तो यू ऑलवेज हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैम ने इसका एग्जाम्पशन कराया था या नहीं कराया था. अगर नहीं कराया था तो इट मींस इट इज फुल्ली टैक्सेबल. ओके. Then next comes the categories of allowances which are fully exempt. So exempt के cases में first है आपका allowances to government employees under section 10 subsection 7. ये है अगर any amount is paid as a provision for rendering services outside India by the government employee is exempted. So अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाहर सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीन्स द सैलरी इज बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर अपने एम्प्लॉय को टू प्रोवाइड द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया अगर कोई भी कुछ भी दे रही है, अलाउंसेस दे रही है या फिर बेनिफिट्स दे रही है, पर्क्स दे रही है, दीज आर ऑलवेज एग्जेम्प्टेड. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. ये मैं 2-3 बार ही करा चुकी हूँ बट स्टिल इट्स अ रिवीजन फॉर यू कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो इट इज ऑलवेज फुल्ली एग्जेम्प्ट. अलाउंसेस टू जजेस, सैलरी नहीं होती, सैलरी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन इंडियन इनकम. सैलरी तीनों में चार्जेबल होती है, याद रखना. सिर्फ अलाउंसेस और परक्विजिट्स आपके नहीं होते हैं. Then allowances to judges of Supreme Court or High Court are not taxable. So अगर सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को कुछ भी अलाउंस मिल रहा है then it is not taxable. सैलरी होती है, अलाउंसेस नहीं होते हैं. Then allowances received by the people working in UNO are fully exempt. अगर कोई भी अलाउंस अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है वहां पे काम करने की वजह से, so that is also fully exempt. So these three are the main categories of the allowances which are always fully exempt. ठीक है, any doubts to anyone so far? कोई डाउट है अभी तक किसी को भी? No doubts? Okay, thank you, Achal. Then this is the third allowance, which is very important from your examination point of view, which is house rent allowance. And it is given under section 10, subsection 13A and rule 4. So house rent allowance क्या होता है? This allowance is given by the employer to the employee to meet the expenses in connection with rent of the accommodation which the employee might have to take. So आप जो employees होते हैं काफी बार they stay in a rented accommodation. So rented accommodation में रहते हैं, so they have to pay the rent, right? So वो rent को compensate करने के लिए जो employer है वो house rent allowance देता है.
ठीक है। और जो ये हाउस रेंट अलाउंस होता है, this is always taxable under the head salaries to the extent it is not exempted under section 1013A. So अगर मैं इसकी डेफिनेशन अभी जो मैंने पढ़ी है इससे ही I can make a judge that these house rent allowances are partly taxable allowances, क्योंकि only the part of that amount is taxable, the rest is exempted. ठीक है। और ये जो बेनिफिट है दैट हाउस रेंट अलाउंसेस के अंदर जो टैक्स बेनिफिट है, दिस इज अवेलेबल ओनली टू द सैलरीड इंडिविजुअल्स जो सैलरी देते हैं, दैट इज द एम्प्लॉयज. इट इज नॉट इन केस ऑफ योर HUF or your firm or your for directors, partners, किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है. दिस इज ओनली फॉर द एम्प्लॉय. सो सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए दिस टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल who has a HRA component as part of his salary structure. मतलब सैलरीड एम्प्लॉय है प्लस उसको हाउस रेंट अलाउंस भी मिल रहा है. अगर उसे हाउस रेंट अलाउंस उसका एम्प्लॉयर नहीं देगा तो देयर विल बी नो टैक्स बेनिफिट. ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला है कि आप फिर एग्जाम क्या करोगे जब आपके पास कुछ अमाउंट ही नहीं है, तो उसमें से कुछ एग्जाम ही नहीं करना है. तो टैक्स बेनिफिट तभी मिलेगा जब हाउस रेंट अलाउंस होगा आपके सैलरी स्ट्रक्चर में, and the employee must have to stay in a rented accommodation. ठीक है, उसको रेंटेड, अगर वो रेंट पे ही है तभी मिलेगा उसको एग्जेम्पशन. इन केस आपका एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है और आप रेंट पे नहीं रहते हो, आप अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे रहते हो, तो उस केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. दिस एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर दोज पीपल हु आर इन रियलिटी स्टेइंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन. ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स कैन नॉट अवेल दिस डिडक्शन. ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं मिलेगा, ये मैंने बता दिया. इट इज ओनली इन केस ऑफ योर सैलरीड इंडिविजुअल्स. क्लियर है? देन एग्जेम्पशन. The exemption for HRA benefit is minimum of actual HRA received, जितना तुम्हारा एम्प्लॉयर दे रहा है, that is the actual amount. Second is 50% of salary if living in metro cities. So metro cities आपकी चार है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. हमेशा याद रखना कि अगर एम्प्लॉय इन चारों सिटीज में से किसी भी सिटी में रहता है तो उसका जो एग्जेम्पशन लगेगा दैट विल बी 50% ऑफ सैलरी. अगर इन चार जगहों पे नहीं रहता तो इट विल बी 40% ऑफ सैलरी. ठीक है, सो 50% फॉर लिविंग इन मेट्रो सिटीज एंड 40% फॉर लिविंग इन नॉन मेट्रो सिटीज. And the third one is excess of rent paid annually over 10% of annual salary. So it means rent paid minus 10% of salary. ठीक है, यही हुआ इसका excess of rent paid annually over 10% of annual salary. So rent paid minus 10% of salary. और इन तीनों का अमाउंट निकालने के बाद you have to select the least amount, that is minimum of. जो भी इन तीनों से मिनिमम होगा दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A. सैलरी क्या है? इट इज सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और ये आपको पता है इट इज बेसिक सैलरी, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज टर्नओवर. Okay, so this is your definition which is already there in many other benefits. तो यही आपकी सेम डेफिनेशन है फॉर सैलरी इन केस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस. और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, द टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल टू द पर्सन ओनली फॉर द पीरियड इन विच द रेंटेड हाउस इज ऑक्यूपाइड. ठीक है, जब तक वो रेंट पे है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ईयर ही वॉज ऑन रेंट ओनली फॉर 6 months. ठीक है, तो हर चीज उसकी फिर वो 6 months के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होके ही यू विल टेक द लीस्ट व्हाटएवर द लीस्ट वैल्यू इज देयर. तो ये सिर्फ उसी पीरियड के लिए है जिस पीरियड के लिए द रेंटेड हाउस इज occupied by the employee. And the second one, second important note is salary is to be taken on due basis in respect of the period in which rented house is occupied. So हमेशा due period पे होगा, received basis पे नहीं है. So अगर पुरानी कोई सैलरी आती है तो वो इसमें add up नहीं होगी,
या फिर नई सैलरी टाइम पे नहीं आती है तो वो डिडक्ट नहीं होगी. इट विल ऑलवेज बी ऑन ड्यू बेसिस. ठीक है. सो अगर इतना आपका सैलरी कंपोनेंट बनता है तो वी विल अज्यूम दैट इट इज बीइंग ड्यू ऑन एवरी मंथ और उसी के अकॉर्डिंगली यू विल मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ मंथ्स. अभी तक वी हैव कवर्ड द एग्जेम्पशन एंड इम्पोर्टेंट नोट्स. अब एक इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है, हमारे एग्जेम्पशन से हमें पता चल गया दैट द एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एचआरए इज बेस्ड अपॉन 4 फैक्टर्स. एक तो आपकी सैलरी क्या है, दैट इज सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. एक लोकेशन कहाँ है जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, वेदर इट इज इन मेट्रो सिटीज और इट इज इन नॉन मेट्रो सिटीज. थर्ड आता है रेंट पेड, एक्चुअल में रेंट कितना पे कर रहा है. और फोर्थ आता है आपका हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड. ये आपके 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. सो अगर क्वेश्चन में इफ इट इज मेंशन दैट ये सारे के सारे फैक्टर्स सेम है और ड्यूरिंग द ईयर कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब आपकी सैलरी भी चेंज नहीं हुई, लोकेशन भी चेंज नहीं हुई, रेंट पेड भी नहीं चेंज हुआ, एचआरए भी चेंज नहीं हुआ जो रिसीव हो रहा है, अगर ये चारों के चारों सेम है तो यू कैन डू द कैलकुलेशंस ऑन एनुअल बेसिस. ठीक है. आप पूरे साल की दैट इज मल्टीप्लाई बाय 12 करके पूरे साल की निकाल सकते हो कैलकुलेशन. बट अगर इन 4 में से एक भी फैक्टर में चेंज होता है ड्यूरिंग योर प्रीवियस ईयर, अगर एक में भी होता है, then you have to divide the periods and you have to make the calculations on monthly basis. ठीक है. अभी we'll do the question on this, then you'll understand the concept which I am just trying to say. कि अगर चारों फैक्टर सेम है तो डायरेक्ट एनुअल बेसिस पे वैल्यू निकालो. अगर एक में भी चेंज है या दो में चेंज है या तीन में चेंज है, चारों में चेंज है प्रीवियस ईयर में, तो अपने पीरियड को ब्रेकअप करके मंथली बेसिस पे ये एग्जेम्पशन निकालो. तो अभी करते हैं. किसी को भी एग्जेम्पशंस में कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एक कंसेप्ट क्लियर है. क्वेश्चन करते हैं हम. अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अनम्यूट एंड लेट मी नो. No doubt. Okay, so this is the first illustration. Mr. X is working in ABC Limited in Gurgaon. His basic salary is 32,000 per month and DA is 10,000 per month, out of which 6,000 is for retirement benefits. He makes sales of rupees 5 lakh per month and he is given first 1% commission on sales, additional commission of rupees 300 per month, then commission on profits at the rate of 0.1% and profits are 10 crores. He invests rupees 6,000 per month to recognized provident fund account and equal amount is invested by the company. Interest is rupees 15,000 credited to RPF account at the rate of 10% per annum. He gets HRA of rupees 15,000 per month, pays rent at the rate of rupees 10,000 per month. His business income is rupees 5 lakh and he has invested rupees 1 lakh in PPF account. Calculate his taxable income. So 2 minutes लो, ये question analyze करो and at least apart from your this HRA, बाकी सब compute कर लो. ये ड्यूरिंग द ईयर रिटायर नहीं हुआ है, ना ही इसने रिजाइन किया है, so it will be for entire 12 months. So calculate his basic salary, calculate his dearness allowance, his commissions, and whatever the treatment we have learned for recognized provident fund. Just try it out. 2-3 मिनट का टाइम लो, उसके बाद I'll show you the solution.
Okay, so let's do the question now. So 30,000 per month था, so basic salary is 32,000 into 12. So this is 3,84,000. Now next is your DNS allowance. So it was 10,000 per month. So 10,000 into 12, 1,20,000. Then next is commission on sales and 1%. So it is 5 lakh per month tha, so it is 5 lakh into 12 into 1% of commission. So when you multiply this, you will get 60,000 of rupees. Then next was additional commission of rupees 300 per month. So it is additional commission, which is monthly commission and it is fixed commission. So it is directly 300 into 12. So this is 3,600. Next one is commission on profits, which is 0.1%. And the profits are 10 crores. So this is already an annual figure. So 10 crores का profit पे इसको 0.1% मिल रहा है. So that equals to 1 lakh rupees. So 1 lakh भी हमारा हो गया. So all the commissions we have added. Now the next is the treatment regarding to the recognized provident fund. So recognized provident fund में the employee was investing rupees 6,000 per month to RPF account. So 6,000 per month जो भी employee कर रहा है वो तो deduction मिलती है under section 80C. अब जो employer same amount contribute कर रहा है 6,000 per month into 12 that is 72,000. But इसमें exemption कितने की है? Actual या फिर 12% of salary for retirement benefit. तो सबसे पहले हम salary for retirement benefit निकालेंगे. तो salary for retirement benefit I am calculating it only अभी monthly wise. ठीक है? तो monthly wise मेरी basic salary कितनी है? 32,000. मेरा DNS allowance तो है 10,000 but out of which only 6,000 is for retirement benefits और commission मेरा क्या है 5 लाख हर महीने है. So 5 lakh into 1% is 5,000. So मेरी monthly salary मेरे को आ गई it is 43,000. Clear है? 43,000 is my monthly salary. Now I can simply just multiply with this 12. So 5,16,000 is my yearly figure. And for provident fund calculations, we have already discussed that salary for retirement benefit will be for the entire year. So 5,16,000 हमारे पास investment आ गई. Now you can simply multiply this with 12%. So 12% of salary for retirement benefit, the amount is coming out to be 61,920. And when you compare with actual amount, it is the least one. So now you can just subtract this 61,920 from 72,000. So this is your net taxable investment of employers to your recognized provident fund. Clear इतना सबको? Next आपका आता है interest. So interest कितना है आपके RPF account में? It is 15,000 is credited to RPF at the rate of 10% per annum. तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 15,000. और लिमिट क्या कहती है एग्जेम्पशन की? 9.5% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. और टोटल इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूसिव ऑफ योर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय. तो अगर 10% ऑफ समथिंग पे मुझे 15,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो मैं समथिंग निकाल सकती हूँ. दैट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट. तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी मेरी? 15,000 डिवाइड बाय 10%. So 1,50,000 it means मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी. ठीक है? क्योंकि 15,000 अगर मुझे 10% पे मिल रहा है तो मुझे अगर मुझे किसी का अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट, जैसे 10% ऑफ टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 15,000, तो वो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा? 15,000 डिवाइड बाय 10%. ये आपके सिंपल मैथ है. तो अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई 1,50,000. नाउ यू विल मल्टीप्लाई 9.5%. 9.5% into 1,50,000, it is coming out to be 14,250. Now this is the least one. Now you can subtract this from the actual amount 15,000. So 750 is your interest on recognized provident fund which will be chargeable to tax. Clear इतना सबको?
अब नेक्स्ट आता है आपका हाउस रेंट अलाउंस. सो हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन क्या कहती है? सबसे पहले तो सो एक्चुअल अमाउंट कितना है? 15,000 पर मंथ. सो यू सिंपली मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे ध्यान देखना, मैं सारी चीजें 12 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक ही चीज है आपके प्रीवियस ईयर में. Everything is consistent. No factor is changing. So in this case, 15,000 into 12 is your 1,80,000 is your actual amount. Okay. Then next, वो रह कहाँ पे रहा था? उसकी एबीसी लिमिटेड थी गुड़गांव में. उसके अलावा उसने ये नहीं बताया कि वो जो एम्प्लॉय था वो कहाँ पे रह रहा था. So I am assuming since it is not mentioned, so it was staying in गुड़गांव. ठीक है, जहां पे उसकी एबीसी लिमिटेड थी, जहां वो काम कर रहा था, वहीं पे ही वॉज स्टेइंग. एंड गुड़गांव इज अ नॉन मेट्रो सिटी, क्योंकि आपकी मेट्रो सिटी की वो जो बस 4 ही सिटीज हैं, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई. उसके अलावा आपकी सारी सिटीज आर नॉन मेट्रो सिटीज. तो गुड़गांव आपकी नॉन मेट्रो है, तो आपका क्या लगेगा? 40% ऑफ सैलरी. So 40% of salary, and salary we have already calculated. It is yearly, it is 5,16,000. So you simply multiply 40% with 5,16,000. So it is 2,06,400. So आपका सेकंड भी आ गया. अब थर्ड आता है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी. तो रेंट पेड कितना है? 10,000. So 10,000 into 12 minus 10% of your salary for retirement benefits. Then this is again 5,16,000. When you solve it, you will get this amount, 68,400. So now out of these three, 68,400 is the least one. So it will be exempted, and net 1,11,600 will be your chargeable to tax. ठीक है, क्लियर है सबको? हाउस रेंट अलाउंस. In this case, nothing was mentioned, so I am assuming that he was staying in Gurgaon for the entire year. ठीक है, ये assumption आपको हमेशा लेनी पड़ेगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो दिस इज द implied assumption. Now you can add them up. You will get a gross salary, right? ग्रॉस सैलरी सबको ऐड करके आ गई है आपकी. देन डिडक्शंस आपको खाली 50,000 की मिलेगी, ना प्रोफेशनल टैक्सेस की मिलेगी क्योंकि पे नहीं करे, ना आपके एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस ना तो दिया है, अगर दिया नहीं है तो उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं. देन टैक्सेबल सैलरी होगी आपकी 7,90,000 30 माइनस 50,000, सो इट इज 7,40,000 30. देन बिजनेस इनकम दी हुई है 5 लाख रुपीज, सो यू कैन सिंपली ऐड द बिजनेस इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम आ गई इन दोनों को ऐड करके, सो दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. सो एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में? 6,000 पर मंथ. सो 6,000 इंटू 12 इज 72,000. और पीपीएफ में कितना इन्वेस्ट किया? जस्ट चेक द क्वेश्चन. ही हैज इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख इन पीपीएफ. ठीक है, पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम कितनी होती है? 500 और मैक्सिमम कितनी होती है? 1.5 lakhs. इन दिस केस ही हैज इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, सो 1 लाख आ गया. बट आपका सेक्शन 80CE क्या कहता है कि आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1 इन तीनों के मिला के 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. So in this case it is coming out to be 1,72,000 और ये दोनों आपके किस में आते हैं? 80C में. So I am assuming ना तो इसका 80CCC है, ना ही इसका 80CCD है. ठीक है, so in this case it is 1,72,000. Maximum is 1,50,000. So 1,50,000 will be only allowed to be reduced under this case. चाहे वो कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दे, doesn't matter. 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकती. Then total income you will just subtract it. So this is 10,90,030 is your total income. So I hope everything is clear. कोई doubt है तो पूछो, otherwise I am moving to the next question. Any doubts to anyone?
नो मैम। नो, परफेक्ट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज वी हैव द सेम example as above, and the company has increased his HRA to rupees 18,000 per month with effect from 1st September 19. ठीक है, it means they have changed their HRA. So initially HRA क्या था आपके क्वेश्चन में 15,000, राइट? इससे पुराने वाले क्वेश्चन में वो 15,000 था, और 1st September 19 को they have increased it to 18,000 प्लस मिस्टर एक्स भी गुड़गांव से क्या हुआ, दिल्ली शिफ्ट कर गया ऑन 1st February 2020. So initially he was in Gurgaon, now he has shifted to Delhi. Now in this case two factors have changed. One is location and the other one is house rent allowance. It means we can't calculate the exemption yearly now. We have to divide the periods. जो साल में जब जब चेंज हुआ है उसको हमें डिफरेंट सेपरेट कर लेना है. सो पहला जो चेंज हुआ है दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2019. और क्या चेंज हुआ है, योर एचआरए हैज चेंज्ड. सो फर्स्ट पीरियड जो मैंने निकाला है दिस इज फ्रॉम 1st April to 31st August 2019. दिस इज माय फर्स्ट पीरियड. ओके, क्योंकि इस पीरियड तक एवरीथिंग वाज सेम. उसके बाद नेक्स्ट पीरियड है 1st September से शुरू हो रहा है, और उसके बाद अगला फैक्टर कब चेंज हो रहा है, 1st February को. सो 1st September से 31st January इज माय सेकंड पीरियड. ठीक है, जिस टाइम पे जौन सा फैक्टर चेंज होगा उसी पॉइंट पे आप पीरियड को ब्रेक कर दोगे. और नेक्स्ट आपका पीरियड क्या होगा, फ्रॉम 1st February to 31st March. ठीक है, दिस इज योर थर्ड पीरियड. So whenever in any question any factor changes on that particular date, divide the periods. ठीक है, मंथ कितने हो गए इस पीरियड में आपके 5 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. दूसरे वाले में भी 5 मंथ्स है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, और लास्ट वाले में 2. ठीक है, आपने अपने महीने कैलकुलेट कर लिए. अब आता है पहला क्वेश्चन कि हमें एग्जेम्पशन निकालने है. तो फर्स्ट एग्जेम्पशन हम दे रहे हैं एक्चुअल कितना मिल रहा है उसको. ठीक है, सो एक्चुअल है उसका 15,000 till 31st August, right? So 15,000 into how many months? 5 months, because in this period these are only 5 months. So 15,000 को multiply करो 5 से, so 75,000 is for this period actual HRA. For the next period, that is from 1st September to 31st January, it is 18,000. So 18,000 into 5, it is 90,000. And for the next remaining periods it was same, that is 18,000. So 18,000 into 2, it is 36,000. So for every period we have calculated the respective house rent allowance. Clear है सबको? क्योंकि 15 से 18 सितंबर में हुआ था, तो सितंबर से पहले 15 ले लिया, उसके बाद हमने 18 रखा है कैलकुलेशन में. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ओके, सो रेंट उसका चेंज नहीं हुआ है, उसका रेंट कितना है 10,000 रुपए. अगर वो चेंज होता तो वो भी हमें पीरियड लाना पड़ता, बट अभी चेंज नहीं है. इट इज 10,000 पर मंथ. गुड़गांव में भी 10 था और दिल्ली में भी 10. ठीक है, सो 10,000 इंटू 5 15,000. ठीक है, यहाँ पे 15,000 हो गया. अगेन 10,000 इंटू 5 50,000. 10,000 इंटू 2 20,000. सो रेंट पेड हमारा क्लियर है. अब सेकंड हमारा कंसेप्ट आता है इसी फॉर्मूला में 10% ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. अगर आप देखो तो सैलरी भी हमारी चेंज नहीं हुई है, ना ही हमारी बेसिक सैलरी चेंज हुई है, ना ही हमारा डीए चेंज हुआ है, और ना ही हमारा कमीशन ऑन कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स अचीव्ड बाय एम्प्लॉय भी चेंज नहीं हुआ है. तो मैंने जो पुराना मंथली निकाला था आपका सैलरी में, that is 43,000 rupees, it is my monthly salary for retirement benefits. ये मैं already निकाल चुकी हूँ monthly. So 43,000 we have in hand. Now you can simply multiply. Just open up your calculator. So 43,000 for how many months? 5 months. So 2,15,000 is the rent pay. This is the salary for those 5 months.
months, you can multiply them with 10%. So 21,500 is your 10% of salary for retirement benefit for first period. So when you subtract this, it is 28,500. Similarly, for the next period, again it is for 5 months, so you can multiply 43,000 with 5 months, then again multiply with 10%. So 21,500. So it is same in both the periods. So 50,000 minus 21,500. So 28,500 is for this particular period. Now for the next one, it is only for 2 months. So 43,000 into 2, that is 86,000, multiply with 10%, so it is 8,600. So you subtract 8,600 from 20,000, so it is 11,400. So if your second part is also done, where it is rent minus 10% of salary for retirement benefits. Now next is 50% or 40% of your salary. So in the first case, in the first period, he was staying in Gurgaon. And in the next case also, he was staying in Gurgaon because he changed his city to Delhi on 1st February. So in the third case only, he was in Delhi. So first Gurgaon का है, तो salary आपको पता है क्या है आपकी, आपने calculate करी हुई है. So it is 43,000 into 5 months, because this period is only for 5 months, so period के accordingly निकालोगे, multiply with Gurgaon था तो 40%, so it is 86,000. So for first period it is 86,000. For the next period everything is same, so it will be 86,000 only, क्योंकि period month भी same है, salary भी same है और 40% भी same है. It is same in both the cases. Then for the third period, he was there in 2 months and he shifted to Delhi. So 2 months tha, to 43,000 into 2, 86,000, multiply with now 50%. So 0.5, 43,000. So in this case, it is 43,000. Clear है सबको ये? कि हमने हर पीरियड का सेपरेटली एग्जेम्पशन निकाल लिया. अब हमारे पास तीनों पीरियड्स के सेपरेट अमाउंट आ गए. नाउ यू जस्ट हैव टू ऐड देम अप. ठीक है, अब आप हर पीरियड को ऐड कर दोगे. सो एक्चुअल एचआरए क्या होगा? 75,000 प्लस 90,000 प्लस 36,000. आपका रेंट माइनस 10% ऑफ एसआरबी क्या होगा? 28,500 प्लस 28,500 प्लस 11,400 और 50% या 40% जो भी केस है उसमें आप इन तीनों को ऐड कर दोगे. तो जब आप ऐड करोगे you will get these amount, and out of all 68,400 is the least one, so it will be allowed as a deduction from your house rent allowance. So आपका जो actual HRA था, that is 2,01,000, उसमें आप subtract कर दोगे rent, this 68,400, so net that is 1,11,600. नहीं, sorry, it is wrong. ये गलत है, यहाँ पे 2,01,000 आएगा आपका, क्योंकि चेंज हुआ है ना आपका एचआरए. सो 2,01,000 माइनस 68,400. 2,01,000 minus 68,400, that is 1,32,600 will be charged to tax. इसमें 1,80,000 नहीं आएगा, क्योंकि आपका 18,000 तो अभी 2 महीने के लिए है ना, बाकी तो 15,000 था ना, बाकी 10 महीने के लिए. सो आपका अमाउंट ये आएगा इसमें 2,01,000. उसको सब्ट्रैक्ट करोगे 68,400 से, तो यू विल गेट दिस अमाउंट 1,32,600. So this is the answer. Baki everything will remain the same. Your deductions, your calculations for commissions, for your recognized provident fund, everything will remain same. This is only in regards to the house rent allowance computation when any of the factor changes. So you can practice this from your books. Books में काफी questions है on your HRA in which 1 factor changes or 2 factor changes or 3 factor changes. But the concept will remain the same, that whenever any factor changes, it means you have to break the period.
और उस पीरियड के अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंप्यूट एवरीथिंग। ये तीनों के तीनों जो आपके फॉर्मूला में है वो तीनों के तीनों फिर से कैलकुलेट होंगे फॉर एवरी पीरियड, और आपको ये चेक करना पड़ेगा किस फैक्टर की उस टाइम क्या वैल्यू थी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज आएगी देन यू हैव टू ऐड देम ऑल अप, और ऐड करने के बाद आप एक्चुअल में से जो भी लीस्ट है दैट यू विल सब्ट्रैक्ट। एनी डाउट्स टू एनीवन? कोई डाउट है बेटा किसी को? नो मैम। नो, क्लियर टू एवरीवन? चलो परफेक्ट है, फिर हम स्पेशल अलाउंसेस अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपनी मंडे को। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आई एम जस्ट टेकिंग द अटेंडेंस।